पीडीएफ दिख रहा है बेटा आप लोगों को? एमएससी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. So let's start. So today we'll start the topic electrochemistry. Now this electrochemistry deals with the relationship between the chemical energy and the electrical energy, and the conversion of chemical energy into the electrical energy and electrical energy into the chemical energy. अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, that is common definition for the electrochemistry, or common in one sentence you can define the electrochemistry. Okay, so then in the electrochemistry it includes the chemical reaction, and this chemical reaction takes place due to the passage of electrical energy. When the electric current is passed into a certain solution, then because of this passage of electric current, the reaction takes place between the reactants which is present in a solution. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि because of this chemical energy, this because of this electrical energy, the chemical reaction takes place and the product is forms. Either this product is in the form of molecules or it is in the form of ion. Ionic products बनते हैं, ions का formation होता है या molecules का formation होता है. ठीक है, so this is the one thing, that is because of electrical energy the chemical reaction takes place. Or another thing is that because of the chemical reaction the electrical energy is generated. जो भी हम लोग batteries use करते हैं, that is a simple thing. Cell जो हम लोग use करते हैं ना, dry cell, then the batteries which are used in our calculators और in our wrist watch, digital watch है ना, यहाँ पर जो हम लोग बैटरी वगैरह यूज करते हैं, that is an example of the electrochemical reactions, that is which is taking place, means ki chemical reactions, and because of this chemical reaction the electrical energy is generated. So the compounds are present in the cell, some certain reactants are present in the cell, and these reactant reacts and there is a generation of the electric current. Okay, so in this case, for the generation of the electric current, here we have the so for the generation of electric current, the electric current is generated because of the chemical reaction. So the important base of the electrochemistry is the redox reaction. Redox reaction means the reduction and oxidation reaction taking place. Okay, so what do you mean by redox reaction? Anyone? Students, what do you understand by the redox reaction? Ma'am, in which the oxidation and reduction occur simultaneously. In which the oxidation and reduction occurs simultaneously. Oxidation means there is a loss of electron. Electron is given out by the compound. Electron is given by the substance, and because of the loss of the electron, we say that that particular substance is undergoing the oxidation process, and that given electron is accepted by the under reactant, and we say that the substance is undergoing the reduction process. So reduction means acceptance of the electron, and oxidation means the loss of the electron in इलेक्ट्रॉन टर्म्स, जो हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, सो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस होता है, दैट इज द reduction and oxidation process, and these reduction and oxidation process are taking place around us. That is in a photosynthesis process also the reduction reaction is taking place. When we burn a fuel, there also the oxidation reduction process is taking place, or in the digestion of the food there is also a reduction reaction. Okay, so in every steps we have the redox reaction where the exchange of electrons are taking place, and because of this exchange of the electrons the reduction is the redox reaction is fulfilled, and the certain product is formed. Okay, so this is a common redox reaction which is taking place around us. Now the electrochemical changes which are taking place around us, around us, it takes place in through the different methods. That is the we have the electrolytic cells and we have the galvanic cells. Okay, so electrolytic cell means here the electrochemical reaction is taking place in which the electrical energy is converted into the chemical energy. Okay, and this reaction is non spontaneous, means वहां पर जो भी chemical changes होते हैं in the electrolytic cell, that chemical reaction, that reactions are non spontaneous reactions. It means we have to provide some energy for the proceeding
of the reaction for the occurrence of the reaction. Okay. And next we have the electrochemical cells or the galvanic cell, in which also the electrochemical changes are taking place. So in the electrochemical cells or in the galvanic cell, the chemical energy is converted into the electrical energy. Okay. So when the chemical energy is converted into the electrical energy, then there is a this type of reaction has a spontaneous reaction, or this type of reaction is a spontaneous reaction where the chemical reaction takes place, and because of the chemical reactions the generation of the electrical energy takes place. Okay. So this is the chemical changes which are taking place through this process. Okay. Is that clear to you all? So this is a small introduction for electrochemistry, and in this case the process of electrolysis which are taking place in the जो भी हमारा electrolysis का process होता है, that electrolysis process takes place in an electrolytic cell. So in an electrolytic cell we have two half cells, that is the reduction half cell and the oxidation half cell. ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, that's why we are simply हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि है ना. तो reduction half cell means the cell in which the reduction process is taking place, that is a gain of electron is taking place, and oxidation half cell का मतलब होता है the loss of electron is taking place. ठीक है. So in this case the circuit is completed through the salt witch. These are attached to the salt witch, and electrical circuit is completed through the battery, and the it is completed, and when this circuit is completed the electric current is generated by a battery. ठीक है. So in this case there is a flow of electron. So when the electrical circuit is completed then there is a flow of electron, and this flow of electron means यहाँ पर हमारा क्या है कि जो हमारा oxidation half cell है, in that oxidation half cell the electron is generated, and through the outer circuit that electron flows from oxidation half cell to the reduction half cell. ठीक है. So यहाँ पर हमारा flow of electron होता है, and this flow of electron takes place through the outer circuit, and in the reduction half cells that electrons are accepted by the other substance which is present over there to complete the reaction. Okay. So when the substances which are used in this reactions, they comes under the categories of the conductors. Okay. So commonly we have two types of substances generally, that is the conductors and non-conductors. Now conductors means the substance which conducts the electric current or which allows the passage of the electric current, and the non-conductors are the substances which does not allow the passage of the electric current. Okay. So this is the conductors, and example for the conductors are the metals which are commonly we used as a conductors, then the graphites and few salts, aqueous solution of acid, bases and salts. Okay. So these are the common examples of the conductors, and we have the two types of conductors commonly, that is the metallic conductors and electrolytic conductors. Now metallic conductor means these are the substances which conduct the electric current, but that substances are not decomposed by it. Okay. So in the metallic conductors there is a flow of electron, and electron is a carrier of the electric current. Okay. So in this case the electron conducts the electric current, and the flow of electron in a conductor takes place. So there is a flow of electron, and there is no change in the chemical properties of the substances. The substance remains as it is. Okay. So this is the metallic conductors, and in the metallic conductors there is no transfer of the matter, because electron is moving from one place to the other place within a metallic conductors. So this is a metallic conductor examples, and you have already studied about the metallic bond, common bonds होते हैं ना, which is present in a metal, which carries the electric current from one end of a metal to the other. And metals are the good conductors of the electric current. So why they are good conductors of electric current? Because the free electrons which are present in a metal conducts the electric current, and they move from one end of the metal to the other end of the metal. Is that clear to you all? Yes, ma'am. Friends? Okay. Now
Next, we have the electrolytic conductors. Now, electrolytic conductor means the substances which, when they are present in aqueous solution or in molten state, they gives the ions. Means they are dissociated into its respective ions and they allows the electric current to pass through it. Okay, so here the ions are the carrier of the electric current. When the ions move from one end to the other end, then the electric current is carried by these ions. Okay, and because of which the chemical decomposition of a substance takes place. Because यहाँ पर हमारा कोई भी substance है, when that substance is dissociated into its ions, then हमारा क्या हो जाएगा? अगर substance ionic form में convert हो रहा है तो means क्या हो रहा है? The substance is getting decomposed, है ना? तो there is a decomposition of a substance. So in the electrolytic conductors, the chemical decomposition of a substance takes place and it involves the movement of ions within a solution. तो यहाँ पर जो ions move करेंगे, that ion is moving within a solution. So because of this movement of the ions, the chemical reaction takes place at the two electrodes, we can say that, and there is a transfer of electrolyte in the form of ions. तो यहाँ पर जो हमारे ions होते हैं, that electrolytes होते हैं, that are moving in the form of ions. तो ये हमारे electrolytic conductors हैं. So टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. तो हेयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग डील करते हैं, जो हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ओके, सो we have to study about the electrochemistry of electrolysis of the solutions first. So in the electrochemistry of the solution, is that clear to all? इतना बेटा आप लोगों का क्लियर है सब बच्चों का? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Okay. Yes, ma'am. The electrochemistry of the solution. First, we have the Arrhenius theory of electrolytic dissociation or Arrhenius ionic theory. Now, Arrhenius ionic of spontaneous splitting of an electrolyte into its respective ions when the electrolyte is dissolved in a solvent. ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को, भाई कोई भी सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोशिएट्स इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस. बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जब आप इनको डिसॉल्व करेंगे सब्सटेंसेस को, तो कुछ सब्सटेंस डिसोशिएट होते हैं आयनिक फॉर्म में और कुछ हमारे डिसोशिएट नहीं होते हैं. तो जो सब्सटेंस हमारे आयनिक फॉर्म में डिसोशिएट होते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सो व्हेन द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ solvent, then they dissociate into its ionic components, or the ionization of the electrolyte takes place when they are dissolved in a solvent, or the splitting of the substance takes place when they are dissolved in a solvent, is the electrolytic dissociation. ठीक है, or the electrolytic ionization. For example, here जैसे we have an NaCl salt, common salt, सब लोगों को पता है, and when we dissolve this common salt into the water, then this is splitted into its respective ions. तो यहाँ पर NaCl में हमारे पास क्या है? सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है ना. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? Na+ आयन यानी कि सोडियम आयन, and we have the Cl- ion, that is the chloride ion. Okay, so this is the dissociation of the electrolyte when that electrolyte is dissolved in a solvent, and here the water is a solvent, okay, which is used for dissolving the substance. तो water को हम लोग क्या बोलते हैं? Aqueous solvent भी बोला जाता है. Okay, so in this case, next we have the postulates of the theory. What are the different postulates of this Arrhenius theory? Now in this, first we have the solution, and in the solution, when the electrolytes are dissociated spontaneously, then they have the charged particles, and these charged particles are known as the ions. Okay, so here we have the two charged particles, that is the cations and anions. कैटायंस हमारे क्या होते हैं? द आयंस विच आर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. जैसे हमारा सोडियम आयन है, यहाँ पर देखिए सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन में हमारा क्या है? Na+ है, तो दिस सोडियम आयन इज अ कैटायन. ओके, एंड एनायन मींस द आयन विच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर हमारा क्या है? क्लोराइड आयन है, तो दिस क्लोराइड आयन इज अ एनायन because this ion has a chloride has a negative charge. Okay, so when the electrolyte dissociates, then it is dissociated into cations and anions. Okay,
So cations are generally the metallic radicals which are obtained by the loss of electron from the metallic atoms. So when the metal loses the electron, when the atom loses the electron, then there is a formation of the cation. And anions जो होते हैं, they are the atoms when there is a gain of the electron. When the atom gain the electron, then there is the particular anion get the negative charge. Okay, so this is how the anion is formed. Suppose for example A is an anion. A is a non-metal or an atom which is gaining the n number of electrons, and there is a formation of anion that is An minus. Okay, so this is how the formation of cation and anion takes place in an electrolytic solution. So in this case, the total positive charge present on the cation in a electrolytic solution is equal to the total negative charge present on the anion. तो यहाँ पर equal but opposite इसलिए लिखा जाता है because यहाँ पर charge हमारे अलग है ना, charge are different. So total positive charge on the cation present in a solution is equal but opposite to the total negative charge present on the anion. So in this case, the number of cation and number of anions are same, but the charge present on the cation and anion are just opposite. So cation has a positive charge and anion has a negative charge. ठीक है, सो टोटल हमारे यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्जेस के आयंस तो प्रेजेंट है, बट दीज आयंस हैव द डिफरेंट चार्जेस. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो होता है एज अ होल इट इज अ न्यूट्रल. न्यूट्रल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इफ वी हैव अ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, तो हमारा कैटायन और एनायन कितना बनेगा, 5 कैटायन बनेंगे, 5 एनायंस बनेंगे. सो 5 कैटायन एंड 5 एनायंस दे कैंसिल ईच अदर, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एज अ होल इज अ न्यूट्रल. इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, बिकॉज नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस जो होते हैं दे आर इक्वल. ओके, इज दैट क्लियर? मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. So the cation and anions which are present in a solution, they are constantly reuniting to form undissociated electrically neutral parent molecule. यहाँ पर देखिए A, B is a electrolyte, and when it is dissolved in a solvent, then it is dissociated into cation, that is A plus and B minus anion. ठीक है, सो ये हमारा डिसोसिएशन का प्रोसेस जो होता है, दिस इज द रिएक्शन between this unionized molecule and the cation and anion. This is the reversible reaction. Why it is a reversible reaction? Because यहाँ पर unionized molecules present हैं. This unionized molecule AB is dissociated into A plus and B minus, and this A plus and B minus again they combine with themselves and they again forms the AB molecule. Okay, unionized AB molecule. So there is a dynamic equilibrium present between the ionized and unionized molecule. Okay, so ये जो हमारा process होता है for the electrolytic dissociation process, this process is a reversible process. Why we say that it is a reversible process? Because this again the unionized molecule dissociated into the respective ions, and these ions again combines and they are again converted into the unionized molecules. Okay, so as a whole electrolytic solution में जो प्रोसेस होता है, that process is a reversible process and the electrolytic solution is electrically neutral. ठीक है, is that clear to you all? Why the electrolytic solution is neutral as a whole? So in the electrolytic solution, the ions, they are free to move, and the movement of this ion is because of the effect of electricity, and they are directed towards the oppositely charged electrodes, that is they move towards the cathode and the anode. So cations जो होते हैं they have a positive charge and they move towards the cathode because cathode has a negative charge, and anions move towards the anode because anode has a positive charge. ठीक है, so जो charge का जो movement होता है, that movement of the charge is towards the oppositely charged electrodes. So here अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स में जो हमारे आयंस जो है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में मूव करते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं. इन दैट केस द आयंस गेट न्यूट्रलाइज्ड एट द इलेक्ट्रोड. जैसे हमारा कैटायन है, कैटायन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड, देन कैथोड में जाकर के दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दे गेट न्यूट्रलाइज्ड.
and anions has a negative charge, they move towards the anode, and at the anode they gives out the electron, because anode में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनायन जो होते हैं, दे लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड दे गेट न्यूट्रलाइज्ड at the anode, and at the cathode the cation accepts the electron and they get neutralized at the electrode. That's why it is written here that ions get neutralized at the respective electrode. They move towards the respective electrodes and the loss of electron and the gain of electron process takes place and the ions are neutralized over that electrode. Okay, so यहाँ पर जो हमारा property होती है electrolytic solution की, that properties are the properties of the ions produced. ठीक है, so the ions which are produced because of the dissociation of the electrolytes, that ions has the property of the electrolyte. Okay, is that clear to you all? Students, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay. Now next we have the degree of ionization. Degree of ionization means कि how many number of ions are dissociated into its respective ions, है ना? तो ये हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं? वी आर फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. सो द इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन डायल्यूशन may not be completely ionized and a fraction of total molecule is ionized, and this is known as the degree of ionization. So degree of ionization equal to number of molecules dissociated into ions upon total number of molecules taken. For example, if we have taken the 10 number of molecules and among that 10 number of molecules the 5 molecules are dissociated into its ion, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, fraction of the total molecules, है ना. 5 molecules हमारे ionic form में dissociate हुए और total हमने कितने लिए थे, 10 molecules. तो हमारा degree of ionization क्या हो जाएगा, 5/10, है ना. इससे जो हमारा वैल्यू आएगी that will give the degree of ionization. Means कि particular ions में कितना आयंस की कितनी कैपेसिटी है टू गेट द डिसोशिएटेड इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस. इतना क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू गेट डिसोशिएटेड इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस. So because of this, we divide the electrolytes into two categories, that is the strong electrolytes and the weak electrolyte. Okay, on the basis of the ionization, on the basis of the degree of ionization. So strong electrolyte means the electrolytes which are more or less completely ionized into its when they are present in a solution form. जैसे हमारे alkalis हैं, salts हैं, mineral acids हैं, when we dissolve it into its respective solvents then they totally get ionized. यानी कि जितने molecules हमने लिए होंगे सारे के सारे molecules जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ionized हो जाएंगे, ion के form में convert हो जाएंगे. तो यहाँ पर strong electrolytes में degree of ionization generally 100% होता है और we say that it is a unity 1. Okay, so in this case जैसे हमारे पास HCl है, HCl is a mineral acid and it is dissociated into H plus ion and Cl minus ion. NaCl, sodium chloride, dissociated into Na plus and Cl minus ion. KOH, it is dissociated into K plus and OH minus ion, है ना. तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, strong electrolytes में complete dissociation होता है salts का, complete dissociation होता है electrolytes का, ठीक है, into its respective ions. So this is the strong electrolytes, and we categorize the electrolytes into strong and weak on the basis of the dissociation. Next, we have the weak electrolytes. We see the weak electrolytes, and weak electrolytes means only a small fraction of molecules are dissociated into its respective ions in the solution. ठीक है, some molecules जो होते हैं वो हमारे ions में convert होंगे and remaining जो होंगे वो हमारे parent molecule या original as it is रहेंगे. तो यहाँ पर हमारा degree of ionization क्या होता है, less होता है, यानी कि less number of molecules जो होते हैं they are converted into its respective ions. Okay, so in this case the example is the organic acid, bases, water, ammonium hydroxide, etc. These are the weak electrolytes, and in this case less number of molecules जो होंगे they are dissociated. जैसे हमारा water है, for example water is dissociated into H plus ion and OH minus ion, है ना. And this acetic acid is dissociated into acetate ion and H plus ion.
ammonium hydroxide is dissociated into NH4 plus and OH minus. Okay, so these are the examples for the weak electrolytes, where the degree of ionization or the degree of dissociation is less than unity. Less than unity का मतलब क्या हो गया? Less number of parent molecule is converted into its respective ions. Okay, so after this, next we have the electrolytic solutions conductance, and this electrolytic solution conductance increases when there is increase in this temperature. Now, why there is increase in the electrolytic conductance of an electrolytic solution? बताइए. As the temperature increases, the conductance also increases. बताइए. What is the reason behind it, students? Anyone? कौन बताएगा मुझे? Who will tell me? Why the conductance of electrolytic solution increases? बताइए. पवन, as the temperature, जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज करती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? We have studied in the kinetics that the average kinetic energy of the molecule increases. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, then the average kinetic energy of the ions also increases as the temperature increases, and when the kinetic energy increases, then the transfer of the ions become faster. ठीक है, and conductance जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? Depends upon the transfer of the ions, number of ions present in a solution, and the movement of the ions. Because of this, the conductance of electrolytic solution is decided or it is measured. ठीक है, सो आयंस की वजह से नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, कंडक्टेंस ज्यादा होगा. नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्शन प्रॉपर्टी जो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कम होगी. व्हाट इज कंडक्शन? टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, pass for the passage of the electric current, है ना, through pass the electric current, that is the conduction. Okay, is that clear? Yes, ma'am. So this is the weak electrolyte and the strong electrolytes. Now next we comes to the, in the solution we have the conductivity of the electrolyte. Now what do you mean by conductivity? Conductivity or conductance means the power to conduct the electric current. ठीक है, by the electrolytes. So electrolytes has a power, has a tendency to conduct the electric current, to pass the electric current. So this is property of the electrolyte, that is the conductance property or the conductivity of a property. So the conductance measures the ease with which the electric current flows through the conductor, means the speed through which the electric current is flowing through a conductor. It is a conductance property of the electrolyte, and this conductance is reciprocal of the resistance. Resistance का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज के फ्लो को restrict करना, स्टॉप करना, है ना, एक बैरियर क्रिएट करना. और कंडक्टेंस जो होते हैं that is the opposite of the resistance. So suppose G is the conductance and G is equal to 1 upon R. 1 upon R is the resistance, so it is just opposite, reciprocal of the resistance. So resistance की यूनिट हमारी क्या होती है? ओम्स होती है ना, तो G की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? 1 upon ohms, और we say that it is ohms inverse और mho, MHO. ठीक है, तो 1 Siemens जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है that is Siemens होती है. 1 Siemens equal to 1 ohms inverse और 1 mho, MHO. Okay, so this is the conductivity of an electrolyte. Next we have a specific conductivity, that is the kappa. Now specific conductivity means the conductance of solution of 1 centimeter length having an area of cross section 1 centimeter square or having 1 centimeter square as the area of cross section. Okay, suppose here see in the diagram, here we have a 1 centimeter cube.
cuboid, and where the length, breadth, and height of this cube is 1 centimeter. Here it is filled with the electrolytic solution, and इस 1 centimeter cuboid में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल्ड होगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जितनी कंडक्टिविटी होगी, जितनी कंडक्टेंस पावर होगी, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय kappa इक्वल टू 1 अपॉन ohms into centimeter. Okay, so conductivity हमारा क्या हो जाएगा, 1 upon ohms into centimeter, और ohms inverse centimeter inverse, और we can say that it is mho centimeter inverse. ठीक है, तो हमारा ohms inverse हमारा क्या था, Siemens था, तो S Siemens centimeter inverse. This is the unit of the kappa. Okay, so kappa is also reciprocal of the resistance, that is 1 upon R equal to conductance. So kappa is equal to conductance. Okay, so this is the specific conductance, that is the conductivity of 1 centimeter cube of a electrolytic solution. Is that clear? Now next we have the equivalent conductivity of an electrolyte. This equivalent conductivity means the conductance of all the ions present in one equivalent of electrolyte in the solution at a given dilution. Means if we prepare a electrolyte solution having a concentration of 1 equivalent, then उस particular electrolytic solution की जो हमारी conductivity होगी, that is the equivalent conductivity of an electrolyte. So for example, if one equivalent of an electrolyte contains V in V volume, V ml, है ना, one equivalent of electrolyte को हमने V ml of solution, V ml of solvent में dissolve किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, this is the lambda, that is the equivalent conductivity equal to V into specific conductance of 1 centimeter cube, that is V into kappa, और V हमारा क्या था, V is the volume. So यहाँ पर if the normality of electrolyte is N, then V equal to 1 upon N into 1 upon N liter, है ना, और लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 upon N ml. This is the volume, or 1000 upon N centimeter cube. Okay, so equivalent conductivity equal to 1000 upon N kappa. Okay, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 upon N into specific conductivity. So this is the equivalent conductivity of an electrolytic solution. So unit of this equivalent conductivity of the electrolytic solution is the unit equal to mho centimeter inverse per equivalent. Register. Attendance register. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा Siemens centimeter square per equivalent. Okay, this is the unit for the equivalent conductivity. Now next we have the molar conductivity of an electrolytic solution. Now molar conductivity means the conductance of all the ions present in 1 mole of electrolyte in a solution. Okay, so when we prepare a concentration of the electrolyte having the 1 molar, then that electrolyte की जो हमारी conductivity आएगी, that conductivity is the molar conductivity of an electrolyte at a given dilution. So for example here, if M is the molar concentration in mole per liter, तो हम लोग concentration को किस में measure करते हैं, mole per liter में, तो molar conductivity equal to 1000 upon K, यानी कि V volume में हम लोग prepare करते हैं 1000 upon M into kappa, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर equivalent conductivity के लिए किया था, यानी कि हमारा क्या है, V into kappa, molar conductivity into V into kappa, and if the molarity of electrolyte is M, तो हमारा क्या हो जाएगा, V equal to 1 upon M लीटर. ओके, और लीटर को हम लोग किससे ml में कन्वर्ट करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, और 1 लीटर हैज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम वे मोलर कंडक्टिविटी हमारी हो जाएगी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 अपॉन m, m is for molarity, 1000 upon m into kappa. Okay, is that clear बच्चों, स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो इन दिस केस यूनिट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमारा क्या था, पर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर हमारा क्या है, पर मोल, और साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. दिस इज द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी. इतना क्लियर है?
Now, after this molar and equivalent conductivity, next we see what is the variation in these conductivity just because of the dilution. Variation of specific conductance, variation of molar conductivity, and variation in the equivalent conductivity. So first we see the variation of specific conductance with the dilution. Means when the dilution changes, what is the change in the specific conductance? Dilution का मतलब क्या हो गया कि the concentration of the electrolyte is changed. Okay, and when the concentration of the electrolyte is changed, then what is the change in the specific conductance? So जो specific conductivity होती है और the specific conductance जो होता है, it depends upon the number of ions present in a solution and amount of water present. कितना water present है, what is the dilution, and how many number of ions, how much ion is present. ठीक है. So in this case, as the dilution increases, means when the water is added, the conducting power of 1 centimeter cube of an electrolytic solution decreases. Now, why there is decrease in the conducting power of 1 centimeter cube of an electrolytic solution? जैसे अभी हम लोगों ने specific conductivity discuss किया था, तो specific conductivity में I have told you that the conductivity of 1 centimeter cube of a इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी आती है, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. सो दैट पर्टिकुलर क्यूब हैज अ fixed number of ions, and when the dilution increases, when the water is added in that cube, then the number of ions decreases because वहां पर volume of the solution is fixed. ठीक है, तो उसको हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं सोल्यूशन को. जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर क्यूब में, दैट विल गेट डिक्रीज्ड. एंड व्हेन द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगी, दैट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस. सो द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूटिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. And why there is decrease here, the reason is written here. This decrease is just because there is a lesser number of ions and more water molecules are present in 1 centimeter cube of a solution. Is that clear? Itna clear hai beta? So this is a variation of specific conductivity on dilution. Means जब हम लोग dilution increase करेंगे, specific conductivity decrease करेगी. Dilution डिक्रीज करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है. तो हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? हेलो. Yes, ma'am. Okay. Now next we see the variation of equivalent conductance or molar conductance with dilution. What is the effect of dilution on the equivalent conductance and the molar conductance? Now this conducting power of an electrolyte is just because of the ions. When these ions increases with dilution, okay, and since the degree of dissociation of an electrolyte solution increases with dilution. Now यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट से हमने यहाँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में वाटर ऐड किया, उसको डाइल्यूट करें. डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट ऐड करना. ठीक है, सॉल्वेंट ऐड करें. जब हम लोग सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारे अनडिसोशिएटेड पेरेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोशिएट नहीं हुए थे, वो हमारे मॉलिक्यूल्स भी आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स इनटू द आयंस, the number of ions in a solution increases. उस पर्टिकुलर पूरे सोल्यूशन में आयंस का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही आयंस का नंबर इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है because of the increase in the number of ions present in a one equivalent of electrolyte or 1 mole of electrolytic solution. ठीक है, तो इसीलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पूरे सोल्यूशन के निकालते हैं, जितना सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होता है, और उस सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं जब हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं. तो जब डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन. इतना क्लियर है बेटा आप लोगों का?
Now, how the strong and weak electrolyte varies. Okay, so variation for the strong electrolyte. Now, strong electrolyte means the electrolyte is completely dissociated. So in this case, the conductance of strong electrolytes only, they are always high, and it increases only slightly but linearly with dilution. Means ये थोड़ी सी कम increase करती है, बहुत कम increase करेगी और straight line में constant way में increase करती है. And during this increase in the dilution, there is a point when that dilution, when the increase in the conductivity become constant. ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो हमारी वैल्यू होती है, जहां पर इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाता है, जहां पर कंडक्टिविटी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. मींस हमने इतना ज्यादा डायल्यूशन कर दिया है कि उस पर्टिकुलर डायल्यूशन पे कंडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कंडक्टिविटी एकदम कांस्टेंट हो जाती है, देन दैट कंडक्टिविटी इज नोन एज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इट इज नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. एंड हियर it is represented by the infinity sign. Okay, so conductivity, equivalent conductivity or molar conductivity at infinite dilution. So there is no change in the conductivity when the large amount of water is added into a solution for the strong electrolyte. Is that clear? So ये जो हमारे substances होते हैं where the conductivity varies very slightly with dilution is known as the strong electrolyte. Now, what is the reason? Now, as I have told you that strong electrolytes are the electrolytes in which whole of the parent molecule is converted into the respective ions. Means degree of dissociation जो होता है वो हमारा unity होता है, 1 होता है या फिर 100% होता है. So यहाँ पर हमारा क्या होता है, in the strong electrolytes dilution is complete and all the parent molecules are converted into its respective ions in a solution, or the strong electrolytes are completely ionized in the solution, ionic form में present होता है. And in this case जो में हमारे जब strong electrolyte concentrated form में होगा, वहां पर intermolecular forces, interionic forces present होते हैं बिटवीन द आयंस, है ना, आयंस प्रेजेंट है और उन आयंस के बीच में भी फोर्स प्रेजेंट है. तो ये जो हमारा आयंस के बीच में जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज नोन एज द इंटरआयनिक फोर्सेस. ओके, सो इंटरआयनिक फोर्सेस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. नाउ जब हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे आयंस होते हैं दे आर मूविंग फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं, उनको ज्यादा स्पेस मिल जाती है और मूव करने की वजह से इनका इंटरआयनिक फोर्सेस जो होता है वो वीक हो जाता है. ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इंटरआयनिक फोर्सेस ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, आयंस की जो कंडक्टिंग एबिलिटी होती है वो कम होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में. एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयंस आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इंटरआयनिक फोर्सेस डिक्रीज करता है, तो कंडक्टिंग पावर इनकी इंक्रीज होती है. इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज करेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं. ठीक है, बट इट बिकम्स कांस्टेंट, इट इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड आफ्टर दैट लिमिट इट बिकम कांस्टेंट. Why? Because इंटरआयनिक फोर्सेस जो होते हैं धीरे धीरे करके निग्लिजिबल हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर मूविंग वेरी फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एंड आयंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉर इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी, दैट इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड आफ्टर दैट लिमिटिंग वैल्यू it becomes constant and there is no change in the molar conductivity of the solution. और जब मोलर कंडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, then we say that molar conductivity is the molar conductivity at infinite dilution. यानी कि हमने इतना डायल्यूशन कर दिया है कि कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है कांस्टेंट तक रीच कर गई है, पहुंच गई है. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. सी इन द ग्राफ for the strong electrolyte, when we plot a graph between the molar conductivity or equivalent conductivity versus square root of concentration, then in this case the conductivity increase karegi. Suppose the concentration of the ion is 0.25 and when the dilution increases, means जब हम लोग इसमें water add करें तो क्या हो जाएगा, concentration कम होती जा रही है. See in the case of NaCl
फर्स्ट जो हमारी ग्राफ में जो लाइन है उसको देखिए आप लोग। NaCl में मोलर कंडक्टिविटी हमारी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, डाइल्यूशन कम होता जा रहा है ना, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। स्टीप लाइन जो है इंक्रीज कर रही है एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट द मोलर कंडक्टिविटी बिकम कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है, जीरो डायल्यूशन पे, ये जो हमारी लाइन देखिए वाई एक्सिस पे, जीरो डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी 120 पे आकर के हमारी कांस्टेंट हो गई है। और अगर आप इसमें फर्दर ऐड करते हैं water molecule, then also there is no change in the conductivity. So this conductivity become constant at this point, and this conductivity is known as the molar conductivity at infinite dilution. So molar conductivity or equivalent conductivity of a strong electrolyte is obtained by extrapolation of the curve to the zero concentration. तो यहाँ पर हम लोग जीरो कंसंट्रेशन की तरफ जब कर्व को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर ये जो कर्व है, दिस कर्व मीट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट and this point is known as the molar conductivity at infinite dilution for the strong electrolyte. ठीक है, तो strong electrolyte के लिए हम लोग molar conductivity at infinite dilution को easily obtain कर सकते हैं by extrapolating, by extending the curve towards the zero concentration. इतना क्लियर है बेटा आप लोगों का? MSc students, hello. Yes, ma'am. Okay, so this is how we obtain the molar conductivity at infinite dilution for the strong electrolyte. Now next we see the case of weak electrolyte. So this is a curve for the weak electrolyte. See in the curve, when we plot a graph between the molar conductivity or equivalent conductivity versus concentration for the weak electrolyte, तो यहाँ पर हमारा क्या है, we have taken the weak electrolyte, that is the acetic acid. एंड जब हम लोग यहाँ पर डायल्यूशन इंक्रीज करते हैं, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पेरेंट मॉलिक्यूल्स जो है टोटली डिसोशिएट नहीं हुए हैं रेस्पेक्टिव आयंस में। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर डायल्यूशन कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसका क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जा रही है, और जितना हम लोग डायल्यूट करेंगे कंडक्टिविटी उतनी इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन दिस केस वी डोंट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर कर्व को आप एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे, देन ऑल्सो इट नेवर रीचेज अ कांस्टेंट वैल्यू। जितना आप इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे उतनी ही इसमें डिसोसिएशन होता जाएगा पेरेंट मॉलिक्यूल का, आयंस इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आप कितना भी डायल्यूट कर लीजिए, बट वी नेवर गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा इसमें कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, हमेशा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, so in a case of weak electrolyte the conductivity increases in a regular manner when we dilute the solution. So when weak electrolytes को अगर आप कंडक्टिविटी के टर्म्स में डिफाइन करना चाहते तो हमारे क्या हो जाएंगे, these are the substances whose conductivity increases constantly regularly on dilution, that is known as a weak electrolyte. So in this case, in the weak electrolyte only small fraction of molecules are dissociated and molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte cannot be obtained by extrapolating the curve to the zero. आप इसको जीरो कंसंट्रेशन की तरफ एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे, एक्सटेंड भी करेंगे, तभी हमें कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीजेस एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम्स टू द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. Degree of ionization means increase in the molar conductance with increase in the dilution. So this increase in the molar conductance with increase in the dilution is obtained or attributed restricted to the increase in the degree of ionization of electrolytic substances. So at infinite dilution the degree of ionization जो होगा वो हमारा unity होगा किसके लिए, strong electrolytes के लिए. ठीक है, so the degree of ionization जो होता है it is given by a relation that is the alpha C
means degree of ionization at a particular concentration. C is representing a concentration. Okay, so it is representing the degree of ionization at a given concentration is equal to equivalent conductivity at a given concentration upon equivalent conductivity at infinite dilution. Okay, this is how we obtain a degree of ionization, means how much percentage of electrolyte is dissociated into its respective ions. This is the degree of ionization. और अगर हम मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन upon the molar conductance at infinite dilution. Okay, so this is how we find a degree of ionization mathematically. अगर आप डिग्री ऑफ आपको कोई वैल्यू दी गई है तो उस वैल्यू से हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, दैट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. इतना क्लियर है? तो यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज थ्रू द कुलराउल्स लॉ. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा आप लोगों ने? Yes, ma'am. पढ़ा हुआ है ना? So this was all about for the electrolyte of the electrolytic electrochemistry for the solution. इतना क्लियर है आप लोगों का स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, जिसको आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना. नाउ नेक्स्ट वी हैव, wait just a minute, I'll take your attendance first and then your class will be over. Okay, so all of you attend your roll calls. Today is the 17th, 18th, sorry. Attend your roll calls. Gaurav, next Akansha, Gauri, Present, ma'am. Pavan, Present, ma'am. Raghvendra Singh, Nadeem, Yes, ma'am. Prachi, Present, ma'am. Ayush, Sakshi. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, Sakshi. Ma'am. So for today my class is over. Okay, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और if you have any doubt